ભાવનગર શહેરમાં પોલીસ તંત્ર દ્વારા રાત્રિના 11 વાગ્યા બાદ દુકાનો બંધ કરાવી દેવા મામલે મુખ્યમંત્રીની ધારાસભ્ય સેજલબેન પંડ્યાએ રજૂઆત કરી હતી। ભાવનગરના મહાજનો તથા વેપારી મંડળો, હોટેલ એન્ડ રેસ્ટોરન્ટ યુનિયનની થોક બંધ ફરિયાદો ધારાસભ્ય સેજલબેન પંડ્યાને મળતા મુખ્યમંત્રીને કરેલી રજૂઆતને પગલે સફળતા મળી છે। विधानसभा बजेट सत्र दरमियान माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल ने भावनगर में वहेली होटलों और दुकानों बंद करावी देवामां आवे छे तेवी अमारा द्वारा रजूआत कराई हती। ते संदर्भे गृह विभाग द्वारा गृह विभागना मुख्य अधिक सचिव श्री M.K. दासजी द्वारा गुजरात सरकारना शॉप एंड एस्टाब्लिशमेंट एक्टनी जोगवाई अन्वये भावनगर में नोंधायेली दुकानों और होटलों 24 कलाक माटे खुली राखवा देवामां आवे ते संदर्भे पोलीस अधीक्षक श्री ने जरूरी कायदो ने व्यवस्था जळवाई रहे ते रीतना अमल करवो एवी सूचना आपवामां आवेल छे। अने आ माटे हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री नो के आटली जल्दी आनो एने भावनगर वासीओने सुखद उकेल आप्यो ए बदल एमनो खूब खूब आभार मानु छुं।